लिखाई का पहला लेसन सीखेंगे और इसके अंदर हम बेसिक कंपोनेंट सीखेंगे जिनके साथ मिलने से तमाम हरूफ तहजी बनते हैं। तो ये जो 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं हम सीखेंगे। तो आए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट अलिफ। अलिफ हमेशा 2 लाइनों के मिडल से लिखना शुरू करेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। अगर टेढ़ा अलिफ लिखेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, लिहाजा कोशिश करनी है कि हमेशा अलिफ को सीधा लिखिए और 2 लाइनों के मिडल से लिखिए। सेकंड शेप है बे की। और बे की शेप इस तरह से हम बनाएंगे कि बे के दोनों किनारे लाइन से उठा कर रखेंगे। इस तरह से हम बे लिखेंगे और इसके दोनों कॉर्नर्स लाइन से ऊपर उठा कर रखेंगे। द थर्ड शेप इज शेप ऑफ मून। शेप ऑफ मून जो है इसको तिरछा 45 डिग्री पर शुरू करेंगे, लाइन से नीचे जाएंगे और तिरछा वापस जाएंगे। इस तरह से हम चांद की शेप बनाएंगे। ये पाकिस्तान के फ्लैग के अंदर होता है। Just like this one. This is the third shape, or now the fourth shape. You have to write a ray. In the ray, you have to write a vertical line and then a slanting line. एक सीधी लाइन लगाकर इसको स्लिप कर देंगे। रे का साइज थोड़ा छोटा होगा। इस तरह से हम रे लिखेंगे। तो अब मैं दोबारा से ये 4 शेप्स जो हैं इनको लिखूंगा कोलेक्टिवली। ये देखिएगा, अलिफ हमेशा स्ट्रेट होगा। बे का फर्स्ट कॉर्नर 80 डिग्री पर, सेकंड 90 डिग्री पर। शेप ऑफ मून एंड देन रे। इस तरह से हम लिखेंगे। नेक्स्ट फेज है कि अगर हमें ये लिखना आ जाए तो हमें क्या फायदा होगा। ये बे अगर आ जाए तो इसमें आपको बे, पे, ते, टे से ये सारी फैमिली आ जाएगी। इसी तरह से यहां से ही हमारा फे, काफ और ये भी हो जाएगी। इसी तरह से अगर हमारी शेप ऑफ मून ठीक हो जाए तो यहां से ही हमारा जीम, चे, हे, खे, ऐन, गैन, नून, लाम, सीन, स्वाद, काफ और छोटी ये सारे इसी में बन जाएंगे। और इसी तरह से अगर हमारी रे ठीक हो जाए तो रे, अड़े, जे, से, दाल, डाल, जाल, वाओ और तोए ये सब ठीक हो जाएंगे। तो ये 4 बेसिक शेप से हमारी सारी की सारी हरूफ तहज्जी ठीक हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि सर जब हम लिखेंगे तो हमसे कौन कौन सी मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो नंबर 1, कभी भी अलिफ को टेढ़ा नहीं लिखना, किसी स्लांटिंग लाइन की तरह नहीं लिखेंगे। कभी भी अलिफ को लहरा कर नहीं लिखेंगे, अलिफ को परफेक्टली स्ट्रेट लिखने की कोशिश करेंगे। ये नंबर 1 है। नंबर 2, कभी भी बे के किनारे लेटा कर नहीं लिखेंगे इस तरह से, ये मिस्टेक है। बे कभी भी लाइन के ऊपर लेटी हुई नजर नहीं आनी चाहिए। अगर सारे की सारी आप ऐसे लेटा देंगे तो बे जो है वो खूबसूरत नहीं लगेगी। इसके बारक्स बे के किनारे हमने उठा कर रखने हैं। दोनों कॉर्नर्स जो हैं वो उठा कर रखेंगे, पहला 80 डिग्री पर और दूसरा 90 डिग्री पर। थर्ड शेप है शेप ऑफ मून जो है इसका साइज बहुत बड़ा नहीं बनाना, छोटा लिखेंगे नॉर्मल।
और स्लाइड सा लाइन से नीचे जाएंगे, बहुत ज्यादा लाइन से नीचे नहीं जाएंगे। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाना, कई बच्चे ऐसे सीधा बना देते हैं, ये मिस्टेक है। इसको स्लांटिंगली 45 डिग्री पर शुरू करें। और रे में मिस्टेक क्या होती है, बच्चे इसको वर्टिकल कर फिर हॉरिजॉन्टल चले जाते हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो डियर स्टूडेंट्स, कभी भी इसको आगे को नहीं लेकर जाएंगे, हमेशा एक वर्टिकल लाइन और एक स्लांटिंग लाइन, एक वर्टिकल लाइन और एक स्लांटिंग लाइन, एक वर्टिकल लाइन और एक स्लांटिंग लाइन, इस तरह से होगा। कभी भी इसको हॉरिजॉन्टल लेकर नहीं जाएंगे, ये मिस्टेक है। इसको कभी भी हॉरिजॉन्टल लेकर नहीं जाएंगे। तो ये आज की बेसिक शेप्स हैं। उर्दू की लिखाई के अंदर ये शेप्स हैं 4 और आनी है बार बार। तो इसलिए अब हम चलते हैं शीरीन की तरफ, और वो इंशाल्लाह इनको प्रैक्टिस करेंगे और हम उनका काम चेक करेंगे। थैंक यू। Okay, so now you guys are going to observe me practice the 4 shapes. Before I get started, I do want to point out the paper that I'm using. I don't necessarily want to recommend any special types of paper, but I particularly like this paper because if you'll notice, the spacing on the lines are a bit larger. So it allows for a friendlier experience. And also I like to know exactly, which line to start in above or in between. So this I found helpful. So I'm going to include it. But again, you saw the instructor, he used regular lined paper, and you are free to use that if you prefer. Also, I don't want to recommend any pens or pencils, but I am going to let you know which ones I use. So I really have a better experience. It helps because it's so thin, so it helps me create a neater product. So this is the pencil I use, the Papermate, sharp writer, just a regular, you could even use a regular pencil. But, and then this is the pen I use. It's the Pilot V-Ball Extra Fine. So yeah, these are the 2 things I'm going to be using. You'll see, despite me using those things, you won't see like a perfect product. But here we go. So the first shape is the Aleph shape. Fairly easy. Just a straight line. Yeah. So if I recall correctly, he wants me to write this about 10 times. So I'm going to write each shape 10 times. All right, so there you go. There's my Aleph, just a straight line, not much to it. All right, so let's go ahead and move to B. So he likes to explain this as a shape of a boat. So it's around 80 degrees and then end at a 90 degree. So again, you're gonna start, oh no, this one's it's laying too much. I know this. This one's a little better, but yeah, let's try again. So I'm starting midway between the middle line and the bottom line. Yeah, I think this is okay. Let's try this one. No, now I'm moving further away. This is not angled enough. This idea of only one point touching the bottom line is kind of difficult for me. Yeah, I like how wide this is, but I'm not sure about whether it's laying too much. You know what, I'm gonna mark this, and then I'm gonna ask him about it later. I do think that's the best one. So let's make a couple more. That way we can see if I can consistently produce it. Nah, that's laying too much. Definitely too narrow. Oh, that's not even touching the line, so forget about that one. Let's try one more. Oh, definitely not. What is going on there? Okay, I need to work on this beginning. Okay, so that's B. Let's move to the shape of moon. Okay, so the thing with shape of moon is that you have to try to make it both ways, from right to left and from left to right. So right to, nope, it's too, I gotta, yeah, right to left
but yeah, I think that's okay. So start. Yeah, you should end up a little below this middle line. I think that's good. But I feel like this should be more wider. It should be wider. So let's try again. Yeah, I think that might be better. So right to left would look like that. Oops. Yeah. Well, at least I'm kind of consistently leaving enough space, the same amount of space, you know? So at least that there's that. Okay, let me try left to right now. So, okay, see, there's too much space here, so that's not cool. Nope, definitely not. That just looks like a slanted U. Okay. We'll see. I'll ask him. Okay, so that's the shape of moon. Again, one side starts high and then the other, you know, it steps down. So for whichever direction you're making it, one end is higher than the other end. All right, so let's try re, the shape of re. So he says straight and then slip. Yeah, so you're gonna straight. And I feel like it's too big. You see how it's almost, so let's make it smaller a little. Yeah. Yeah, I think that's good enough. Yeah, but if I look up and actually see the product, you see it's actually not 90 degrees. It's a little, like this one's good. This one? Okay, we'll ask. All right. Time to get some feedback. How did I do? जी आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, तो शुरू से शुरू करते हैं। अलिफ की तरफ चलिए, अलिफ की तरफ मूव कीजिए। आपका अलिफ ठीक है, 90 डिग्री पर है। उसके बाद बे जो आपने इनसर्कल की है, बहुत अच्छी बे है आपकी। है ना? ठीक है। ये जो पहले वाली बे है, वो भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा काम किया आपने। शुक्रिया। अब आते हैं शेप ऑफ मून की तरफ। तो ऑलमोस्ट शेप ऑफ मून नियर टू परफेक्शन, बहुत अच्छी आपने लिखी है। मजीद इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मजीद बेहतरी आ जाएगी। ये भी अच्छी है, फैंटास्टिक वर्क। ठीक है। एंड देन व्हाट अबाउट द रे? रे जो है, कोशिश कीजिएगा कि इसकी जो वर्टिकल लाइन है वो 90 डिग्री पर हो और या फिर 80 डिग्री पर हो। ये कुछ रे जो आगे वाली लिखी है वो ऐसे लग रहा है जैसे 90 डिग्री से ज्यादा एंगल हो गया उनका। राइट। हाँ। उनको कुछ 90 पर या 80 पर लिखे तो ज्यादा खूबसूरत लगेगा। ठीक है। हाँ, जरूर। बहुत अच्छी है। Thank you very much. All right, well, there you have it. Those are the four shapes. And, you know, what blows my mind is this idea that knowing these four shapes will allow you to create the entire alphabet. Basically, if you focus a lot of your attention in the initial stage, you know, in these four shapes, then you should be set. All right, well, thank you very much for joining us, and we'll see you in lesson 2.